3 फूड आइटम, इसमें मुझे 3 फूड आइटम्स खरीदनी है. फर्स्ट इज चीप एंड सेकंड इज मीडियम एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंसिव. सो लेट्स सी व्हाट ऑल आई कैन ईट इन कर्नाटक. तो सबसे पहले मैं आई हूँ जैन चाट भंडार पे. यहाँ की आलू टिक्की और गोलगप्पे बहुत ही अमीर है और ये मेरा बजट फ्रेंडली भी है. तो चलिए आलू टिक्की. It looks so tempting. हो गया. तो क्या करेगी? ये जो टिक्की है 50 रुपये की और ये मेरी मीडियम कैटेगरी में आती है एंड इट्स वेरी डिलीशियस. तो मेरा अगला स्टॉप है डॉलमा आंटी के मोमोज. पीछे आप अगर देख सकते हो ट्रैफिक के बीच में, तो ये छोटी सी शॉप भी नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ एक ठेला टाइप है. और यहाँ और डॉलमा आंटी के मोमोज आपको पता है वो कितने पसंद है. तो लेट्स गो एंड ईट समथिंग. फाइनली मैंने हाफ प्लेट मोमोज ले लिए. 20 रुपीज़ के हैं हाफ वेज मोमोज. So yum. बहुत टेस्टी है. 20 रुपीज़ में ऐसे मोमोज. This was the cheapest food that I had in Karnataka and it is very good. So for the expensive food I am at Belgian Fries and Coke. वाली शॉप है और यहाँ पे हम खाएंगे पेरी फ्राइज. So let's go. I spent 170 rupees and I saved 30 rupees, and this was my challenge. So if you like this video, give it a thumbs up and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and comment down below your suggestions. Also do follow me on Facebook and Instagram. The links are in the description box below. Thank you so much for watching. I will see you in my next video.